Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कोई ट्रेडर आ रहे हैं बता रहे हैं कि देखो मैंने आज थर्सडे है एक्सपायरी है, मैंने 1 लाख के ऑप्शंस ले लिए और वो 7 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, ये कर पा रहे तो मैं भी कर पाऊंगा, क्यों नहीं। फिर एक दिन एक मूव आया गंदा, बट दैट डे आई लॉस्ट अराउंड 30% ऑफ माई कैपिटल। देन आई रियलाइज दैट ऑप्शन सेलिंग इज द रियल गेम। तो ये सीक्रेट अब आप आज बताइए सारा, है ना। ये तो मतलब अब हम लोग थोड़ा जेलसी जोन में भी जा रहे हैं। अच्छा, अभी स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या है? So yeah, गैप अप वाज गुड फॉर यू, पर आप तो शॉर्ट करते हैं। I do Bank Nifty buying as well. So typically I'm an option seller, but 10 to 15% of my portfolio also into buying. What's your CAGR approximately if I ask you? And when I backtested that, fantastic result. मतलब लग रहा था कि मतलब ये तो मतलब होली ग्रेल ही मिल गया है। तो आपने ये लाइव कर रखा है? फेस टू फेस ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत। मैं हूँ आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों, मेरी लाइफ की एक फ़िलोसॉफ़ी है और बहुत प्यारी फ़िलोसॉफ़ी है। सोना बहुत ज़रूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है। अब किसी से भी पूछ लो, चाहे किसी मेंटल डॉक्टर के पास चले जाओ, चाहे फिजिकल डॉक्टर के पास चले जाओ, वो बोलेगा टॉप थिंग इन योर लाइफ विच यू शुड डू इज़ स्लीप। और ये स्टॉक मार्केट ऐसा चीज़ है ना, अच्छों के सोने को ख़राब कर सकता है। बट मैंने ये होने नहीं दिया अपनी लाइफ में। मैंने हमेशा शेयर बाज़ार को एक ही बात बोला है कि देख, सोने में डिस्टर्ब करेगा तो पोजीशन कम कर लूँगा। नींद अपने को बहुत प्यारी है। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट आए ना, इनको भी नींद बहुत प्यारी है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी लेके आए हैं जो कि चैन की नींद स्ट्रैटेजी है। आपको बड़ा मज़ा आएगा इनसे मिलके। यंग है, काफ़ी डैशिंग है, स्मार्ट है और इंटेलिजेंट भी है। ये अब है ना फुल टाइम फैमिली मैन है यार। फुल टाइम फैमिली मैन ऑक्यूपेशन का मैंने सुना नहीं है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस विद हिम कि फुल टाइम फैमिली मैन कैसे बनते हैं और कैसे शेयर बाज़ार ने आपको वो कैपेबिलिटी दी है कि आप फुल टाइम फैमिली मैन बन सकते हैं। बट बिफोर आई कॉल हिम, जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर, न मैंने इनसे पैसे लिए न इन्होंने मुझे पैसे दिए। इट इज़ प्योर एजुकेशन इनिशिएटिव। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। आप कुछ भी इनके साथ करें वो आपके इनके बीच का, मेरे इसमें कोई लेन देन नहीं है। दूसरा, मैं अपने YouTube चैनल का एनालिटिक्स देख रहा था तो 50% लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब के वीडियो देख रहे हैं। चीटिंग है, ये एकदम चीटिंग है, क्योंकि जो चीज़ में पैसे नहीं लगते हैं और जिस चीज़ से YouTube को पता लग सकता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप वो काम में मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खाली कंटेंट मेरा कंज्यूम कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी बैड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। 1 मिनट, 2, 3, हाँ सब्सक्राइब कर लिया। चलो, नाउ लेट्स कॉल आवर गेस्ट फॉर टुडे फेस टू फेस ट्रेडिंग, मिस्टर वैभव शिंदे। हेलो जी। Thank you, Vivek ji. Thank you for having me on this face-to-face interview. This platform has been an inspiration for a lot of traders, and also for me during my initial journey and initial phase. And even now, I refer to the podcast, and a lot of great traders come on this platform, right? And हर person से कुछ ना कुछ सीखने मिला है, which has also helped me become a better trader. So thank you for inviting me, and I hope that even I am able to pass and give my bit to the community that you have created. So yeah, thank you so much. Thank you. I love कि आपने इसको कम्युनिटी बोला। मैं आपको ना जस्ट आपने क्योंकि बात छेड़ दी तो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इस फेस टू फेस से हम क्या कर रहे हैं। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये फेस टू फेस है एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, कि आपके जैसे लोग जो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं और जो बॉय नेक्स्ट डोर है और सबको लगता है कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये ही हमारा उद्देश्य था जब हमने चालू किया था। पहला फेस टू फेस चेतन पंचमिया के साथ था, मेरा मित्र यहाँ पे कैलकाटा में। उसको मैंने बोला था कि चेतन भाई, आपके जैसे हजारों चेतन बन सकते हैं, बट कोई आपकी स्टोरी नहीं सुनाता है। सब तो CNBC में बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ करते हैं। तो आई थिंक वी हैव बिकम वेरी गुड इन दैट। ऑब्वियसली उसमें रिस्क रहता है कि कोई गलत भी निकल सकता है, तो वो रिस्क हम लेने के लिए रेडी है। बट आई एम वेरी हैप्पी that Weber, we were able to identify you. Thank you so much. That you are doing such a great work in market as a trader. तो थोड़ा जर्नी आपके बारे में, Okay, so कैसे चालू हुआ, अभी क्या कर रहे हैं, सारी बातें। Sure. Yeah. थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड दे देता हूँ। Dad is a government employee, mom homemaker. We are 2 brothers, and
अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ या स्टॉक मार्केट की भी बात करूँ, सो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है. इनफैक्ट फॉर माई पेरेंट्स स्टॉक मार्केट इज लाइक गैम्बलिंग. अंटिल 3 years बैक मतलब डैड इन्वेस्ट भी नहीं करते थे. वॉट एवर इट इज इन सेविंग अकाउंट. इट्स ओनली व्हेन आई टोल्ड हिम कि डैडी कुछ करो, म्यूचुअल फंड्स करो, शुरू करो एटलीस्ट. दैट इज व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग. एंड या द मार्केट रिवॉर्डेड. कोविड में पैसा डाला तो पैसे बढ़ भी गए म्यूचुअल फंड्स में. But yeah, I mean, no relation to the market. I was born and brought up in Kalyan, a small place near Mumbai. अच्छा, महाराष्ट्र के हैं. Yes. तो ये जनरली पूछ रहा हूँ कि महाराष्ट्र में मराठी जो होते हैं उनमें स्टॉक मार्केट का कल्चर है? नहीं, in fact, so just our neighbors is Gujarat, right? The Gujarati community जितना वो active होती है in the stock market, and I got to learn a lot from that. My friends in that community as well. Unfortunately, Maharashtrian community doesn't do that much. I think it's more about stability. कि job ले लो and let's have that secure income come in every time, right? So that is, but I think a lot of young traders in this community also are exploring this path. So आप आइडियल बनने वाले हैं. कम्युनिटी को तो अल्टीमेटली आइडियल्स चाहिए ना. एग्जांपल सेट करना पड़ेगा. गुजराती में है ऐसा, मारवाड़ी में है ऐसा, क्योंकि आइडियल्स थे जिनको हम मानते हैं बहुत. तो होपफुली, आई मीन देयर आर कपल ऑफ बंगाली ट्रेडर्स आई हैव रिसेंटली इंटरव्यूड एंड आई एम जस्ट अमेज्ड कि बंगाली एंड मराठी सोच सिमिलर काइंड है कि यार रिस्क अवर्स, अपना जॉब करो, शांति से जिंदगी को जियो. बट देयर आर सम गुड बंगाली ट्रेडर्स आई वेरी गुड टू आइडेंटिफाई. तो आप भी एक आइडल बनने वाले हैं. Let's hope. Yeah, so वहीं से स्कूलिंग की, फिर कॉलेज किया, इंजीनियरिंग की. Yeah, I did my engineering from Thodumal Shani. You mentioned Khar Road, right? So that's the college near Bandra, right? So I did my engineering from there. Then IT में काम किया 3 साल. फिर बोला यार ग्रोथ चाहिए तो MBA कर लिया. Passed out from Jimnal Bajaj. And actually I did my MBA from marketing. So तभी तक there is no touch of financial world that I have seen. And yeah, then I worked in corporate for around 14 years post MBA. Worked in great companies like Johnson & Johnson, Zydus Wellness. Had a great time managing brands. So I was into brand marketing. I used to head different brands. So yeah, I think and then parallelly I started trading. 4-5 साल trading किया, and now everything is on track. I had some health challenges, so I moved out of the corporate world. And then I like यार यहाँ से I'm able to earn decent. Plus I wanted to give more time to my family and health and personal life. Nice. So yeah, I took that call a few months back. Yeah, and it's going great. If you don't mind, can I talk to you about your health challenges? Yeah, I think so. I'll tell you. When you ask me about the journey from becoming a corporate professional to a trader, and actually I don't call myself a trader. I call myself a full-time family man, because that is what I would like to be known as. This journey, there are I think 3 key triggers that helped me transition into this field. If you had asked me 6 years back that where do I see myself, I would have said कि corporate journey है, आगे बढ़ना है, CEO बनना है. That was kind of a thing. But I remember 2017-18, corporate journey was doing great. And I used to read a lot of books for my development, and wealth कैसे बनाना है वो सब पढ़ता था मैं. So I stumbled upon this book by Robert Kiyosaki, is Rich Dad Poor Dad and The Cash Flow Quadrant. And those 2 books have been instrumental in my thinking or shaping my thinking, right? Especially around wealth. What I understood is that the people who are wealthy, for them, they don't depend on a single source of income. They will have multiple streams of income whenever they are looking at things, right? And what I realized is, यार अगर मुझे wealthy बनना है तो I need to have additional sources of income as well. At that time सिर्फ एक ही source था, which was job. And the other thing I realized is that a single source of income is also very fragile. Because the world is changing, right? And now, especially with AI, it's at a different level altogether. There's no job security at all. But yeah, you never know, right? So it's important that, especially with the family depends on you, you should have other sources of income as well. So that is where I started to evaluate कि यार job के साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं क्या, जिससे थोड़ा सा additional पैसे आ जाए.
आई ट्राइड द सर्च किया 1-2 साल बट कुछ मतलब कुछ मिल नहीं रहा था. बट देन इन 2020 कोविड हैपेंड राइट. सो द 2020 में वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम एंड when we are online you see this lot of ads by lot of these tutors on trading. Correct. And I used to get influenced. What used to happen on YouTube, कोई ट्रेडर आ रहे हैं बता रहे हैं कि देखो मैंने आज थर्सडे है एक्सपायरी है, मैंने 1 लाख के ऑप्शंस ले लिए और वो 7 लाख हो गए 10 लाख हो गए. And I was like यार मतलब इंटेलिजेंट तो मैं भी हूँ तो ये कर पा रहे तो मैं भी कर पाऊंगा क्यों नहीं. एंड ऐसे वीडियोस देखता था तो आई यूज्ड टू गेट लाइक कि हाँ मैं भी करूँगा. तो कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर लिए मैंने. अच्छा कोर्सेज ज्वाइन किए, उसमें बहुत सीखा. मतलब सीख ही रहा था बिकॉज हुआ क्या था कि बचपन से सिखाया गया है कि जितना पढ़ोगे उतना बेटर है. ठीक है. तो अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप इंटीग्रेशन सीखो, डिफरेंशिएशन सीखो, आप कैलकुलस सीखो, अलजीब्रा सीखो, सब सीखो, बेटर ही होगा आपका मैथमेटिक्स. बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग में ना आई थिंक एज यू से ना समटाइम्स कि सिंपल रखो चीज़ों को बेटर होता है रादर देन डूइंग लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. एंड व्हाट आई डिड वाज आई हैड टू लर्न अबाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस, 10 इंडिकेटर्स, 10 इंडिकेटर के 10 सेटअप्स, इलियट वेव. फिर कोई बोल रहा है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल मार्केट में, वो करो, लिक्विडिटी चल रहा है वो करो. तो मैंने 1 साल में या 1.5 साल में 3-4 कोर्सेज कर लिए थे. करीब 2-3 लाख के कोर्सेज कर लिए थे मैंने. और कमा 1 रुपया नहीं रहा था मार्केट से फ्रैंकली. आई वॉज ट्राइंग एवरीथिंग, स्पेशली एज व्हेन यू आर इन अ जॉब यू कांट फोकस ऑन द मार्केट्स राइट. सो फिर फोर्स ट्रेड ले लो, फिर वो उसमें इशू आ जाता है, फिर लॉस हो जाता है. अच्छा नहीं तो जॉब के बाद शाम को करते हैं, कमोडिटी करते हैं, तो सिल्वर कर रहे हैं, गोल्ड कर रहे हैं, उसमें लॉस हो रहा है. तो जो घर में टाइम देना चाहता है वो भी मेरा खराब हो रहा है. सो आई रियलाइज दैट समथिंग गोइंग रॉन्ग. एंड व्हाट आई रियलाइज नाउ आई रियलाइज दिस इज ट्रेडिंग वर्सेस अ नॉर्मल अपब्रिंगिंग. दीज आर डाइवर्सली आई मीन वेरी डिफरेंट राइट. बिकॉज बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे स्कूल में एंड जब 100 में से 98 आए हैं, 2 गए हैं, तो खुशी नहीं होती थी कि 98 आए हैं, गम हो रहा था कि 2 मार्क कहाँ चले गए. और वो होता है ना कि डैड विल आस्क कि भाई 2 मार्क कैसे चले गए यार, तेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है. सो always being right or the urge to be always being right was always there, and that is happens in corporate as well right. If you have a target to beat 100%, you achieve 98%, why did you miss 2%? Your variable it goes down right. So but trading, what I realize is you can have a hit rate of 40%. I mean you look at my PNL, 60% are red days in my PNL, 40% are profitable days, but that cover for the entire year's profit. That was one change. The other is यार keep it simple, ज़्यादा मत पढ़ो, जो है उस पर फोकस करो. So I think all these things now I have learned now, but I was not that time I was not making profit. And I should do option buying, typical जो भी averaging करता था, loss करता था बड़े. Then what happened in 2023, I had a health challenge. There is this disease called as Guillain-Barré syndrome. Okay. What happens is that it's an autoimmune disease. Okay. It attacks your nervous system, the peripheral nervous system, and for 10 days I was completely paralyzed. Oh. Like in the hospital, I could see, I could talk a bit, I could somehow eat, but I couldn't move my hands, like nothing. Oh my God. And it's a random, very rare disease. ठीक है? It just happens. So basically what it says, it's a side effect of COVID. अगर COVID के टाइम पे, और मुझे 2 बार COVID हो चुका है, तो अगर COVID के टाइम पे अगर आपने what they call steroids अगर लिए होते हैं from medication, then the probability of this thing happening has increased. So if you see in the last 3 years, GBS as a disease का probability has increased a lot. Okay. After vaccination. Yeah. साइड इफेक्ट. बट आजकल बहुत डॉक्टर लोग क्या है, वो आजकल उसको बहाना बना लिए कि तेरे ये हो रहा है कोविड का वैक्सीनेशन. Maybe. So I'm not an expert in this field. We don't know exactly. But that is what my because ये सब जेनेटिक भी कई बार हो जाती है कि मे बी सम आई डोंट नो, बट ऐसे अचानक से हो जाना. Yeah, scary man. It was very scary because I was just I was around 36. And I had like a 1 year daughter at home. And we were like, हुआ क्या है मतलब? क्या हो गया? सही है. And then it took me 3 months to get back. And I should say that my company really supported me. I used to work in Zydus Wellness before I went full time, right? Achha. And they really helped me out, took care of me. But what I realized is, life also is very fragile. You never know what can happen.
And it might also happen that you don't have the physical capability to deliver for your job and earn money. And what I realized कि बॉस अगर पैसे कमाने हैं ना तो ऐसा होना चाहिए कि यार हम फिजिकली शायद एक्टिव ना हो, फिजिकली टाइम नहीं दे पा रहे हो, एक्टिव टाइम नहीं दे पा रहे हो, बट क्या हम कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं क्या? Okay. That was my key learning from that. Okay. And that is when I started evaluating कि यार ऑफिस में टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो ट्रेडिंग करने के लिए कैन आई ऑटोमेट सम ऑफ माई सेटअप्स, Okay. कि ताकि यार मैं ऑफिस में बैठा हूँ या कहीं पे भी हूँ, मेरा ट्रेड आ रहा है, एंट्री आ रहा है, एग्जिट हो रहा है, वो सब ऑटो मोड पे चल रहा है, मुझे ना करना पड़े. सो एंड थैंकफुली ओवर द पास्ट 5-6 years ऑटोमेशन हैज पिक्ड अप इन ट्रेडिंग. सो आई सॉ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मेनी ऑफ देम आर नो कोड प्लेटफॉर्म्स, राइट, या फिर सूडो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स. So I understood about those platforms, learned about them, saw YouTube videos around them, and एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी ले ली मैंने सुपर ट्रेंड की, कि अगर सुपर ट्रेंड पे ग्रीन सुपर ट्रेंड है, अगर इन्वर्टेड हैमर आ गया उधर, तो मैं पुट बाय कर लूँगा. Okay. सिंपल. और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, चलाओ इसको. Nice. मतलब लिटरली यही रूल था उसमें कि यही करना. और अगर सुपर ट्रेंड अगर ग्रीन है तो ये नॉर्मल हैमर आना चाहिए, अगर रेड है तो इन्वर्टेड हैमर आना चाहिए. सो ये स्ट्रैटेजी 1:2 पे डिसेंट चल रही थी. मतलब कुछ मैंने प्रॉफिट हो रहा है, कुछ मैंने लॉस हो रहा है, बट व्हाट आई सॉ इज माई PNL is becoming a bit green, which used to be red always, is becoming green. So I'm like, यार ये तो चल रहा है. And the other thing was that while I was in office working, ये automatically हो रहा है. I don't have to intervene manually. So yeah, I mean that really changed my outlook. Then what I did was I also understand about options. And होता क्या है ना कि जब आप कोई भी कोर्स भी करते हो, टिपिकली ना वो ऑप्शन बाइंग ही सिखाते हैं. एवरीवन इज सो एक्साइटेड अबाउट ऑप्शन बाइंग कि पैसे डबल करने हैं. आई रियलाइज दैट व्हेन आई लुक्ड एट लॉट ऑफ ट्रेडर्स हु आर सक्सेसफुल, एंड व्हेन आई रेड अबाउट दैट, इवन इंटरनेशनल वंस, फॉर देम इवन इफ यू गेट एन ROI ऑफ एनीवेयर बिटवीन 20 to 40% कैगार लेवल पे, इट्स बहुत ज्यादा. मतलब अगर मैं बोला कि अगर बड़े बड़े लोग इतना कर रहे हैं, तो हमको क्यों ऐसा है कि हमको हर महीने पैसे डबल करने हैं, जो तो हो नहीं रहे, किसी के भी नहीं हो रहे. And I was like, yeah, Vaibhav, there has to be some realistic expectation from market. Correct. So I got down my expectation. I was like, yeah, even if I'm able to beat mutual funds ROI and say even if I generate 20% from market, at least start में, I think that would be a win for me. And then I realized that option selling is the real game, because probability of an option seller winning is 2x as that of an option buyer, because theta works in your favor. That is when I moved to option selling. Okay. So that really transitioned my journey. But yeah, then the third trigger came in, wherein मैं option selling करता था, and I used to do straddles, triangles, typical. While you were in job. While I was in job, yeah, everything. मतलब in fact, what I realized was that given I was doing good in trading, होता ना कि आपकी एक फील्ड में आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, तो ना बाकी सारे फील्ड में भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है. तो इनफैक्ट आई वाज एक्चुअली ग्रोइंग इन माय जॉब, गेटिंग प्रमोटेड एज वेल. सो आई थिंक दैट वाज अ रियली गुड टाइम, एंड सिस्टमैटिक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रियली हेल्प मी अचीव दैट. And what used to happen, I used to do typical straddles, triangles, and you remember that time they were daily expiries. तो क्या है कि मंडे फिर निफ्टी कर लो, फिर बैंक निफ्टी कर लो, फिर निफ्टी कर लो, सेंसेक्स कर लो. सो हम straddle triangle बेच रहे हैं, पैसे आ रहे हैं. What used to happen sometimes, I typically keep stop losses on both the legs. तो मार्केट ने अगर V मार दिया तो मेरा कॉल भी उड़ गया और पुट भी चला गया. अब 10:30 बजे मेरे पास कैपिटल फ्री है, स्टॉप लॉस चला गया, कैपिटल तो फ्री है. मुझे पता नहीं अभी भी क्यों कहता था कि पैसा है ना अकाउंट में, चलो मैनुअल ट्रेडिंग कर लेते हैं इससे. अच्छा, ठीक है. तो एक्सपायरी है, OTM 5, OTM 10 अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे हैं, चलो सेल कर देते हैं यार, कुछ पैसे बन जाएंगे एंड ऑफ डे तक. कुछ हफ्ते सही चला, फिर एक दिन एक मूव आया गंदा, मतलब मार्केट गिर ही रहा था, एंड आई वाज सेलिंग पुट्स एंड आई जस्ट केप्ट ऑन एवरेजिंग with no risk management. Okay, algo trading is working very good, but this trading I was doing, and यहाँ पे एवरेज करते करते एक बड़ा लॉस ले लिया. Thankfully I was trading with only around 7-8 lakhs of capital. So but that day I lost around 30% of my capital. Okay. So basically 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया. अच्छा, at this point I like to say that what really helped me during that exact loss was, I remember that day I called my wife, okay, and my loss was like
जब मार्केट चल रहा था 2.5-3 लाख तक पहुंच गया था. हाँ. एंड आई वाज लाइक यार ये इशू हुआ है, मेरा लॉस है और मैं काट नहीं पा रहा मेरे पोजीशन. हाँ. ठीक है. एंड शी वाज लाइक वैभव इट्स ओके, दिस इज अ फेज एंड यू आर डूइंग अ बिजनेस, लॉसेस होंगे, हाँ. लेट्स लर्न फ्रॉम दिस लॉस, हाँ. यू टेक अ कॉल व्हेन यू वांट टू कट योर पोजीशन. हाँ. ठीक है. बट डोंट वरी, it's a loss that we can bear. It can't, it is not something that will hamper our life in general. Livelihood, हाँ. So Nice. I am really thankful because when you have support from your family members as a trader, that really helps. And I took the loss at the end of the day, but that time I made a promise to myself that I am doing algorithmic trading, automated trading, that's working beautifully. Why do I need to intervene and do manual trading, which I have never succeeded in? Because I can't control my emotions. Let's outsource that as well. And from that day onwards, I have never ever traded a single manual trade. मैंने एक manual trade लिया नहीं. In fact, अगर आप मुझे पूछेंगे अभी कि निफ्टी क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता कि वो 24,000 है, 25 या 26 है, मुझे नहीं पता. मुझे सेंसेक्स ट्रेड चालू है. हाँ, सेंसेक्स में आज मेरा ट्रेड चल रहा है. हाँ. बट मुझे नहीं पता सेंसेक्स क्या लेवल पे है. और मुझे पता नहीं आज गैप अप भी हुआ है, गैप डाउन, और मुझे कुछ आइडिया नहीं है. बट ये एक्सपायरी अल्गो ट्रेडिंग है, एक्सपायरी के बेसिस पे. हाँ, अभी वीकली एक्सपायरी है कल, राइट, सेंसेक्स की. तो आपका पोजीशन ओपन है? हाँ, अभी पूरा ओपन है. मतलब मेरा अराउंड मेरा कैपिटल अगर 100% है तो मेरा 70% ऑफ माई कैपिटल इज डिप्लॉयड राइट नाउ इन निफ्टी एंड सेंसेक्स. और आप मार्केट आवर में मेरे से बात कर रहे हो, स्क्रीन एक बार भी नहीं देखे? या आई मीन मतलब देखना क्यों है, देयर इज नो एक्शनेबल फ्रॉम लुकिंग एट द स्क्रीन, राइट. बट रिस्क मैनेजमेंट अचानक से स्लिपेज हो गया, कुछ हो गया तो आपको पता तो होना चाहिए. The orders are there in the system. अच्छा. Even if there is a slippage that happens, then the algo reconfigures itself to then place a market order and exit. Oh, अच्छा. And if there is an error, I would get a notification on my phone. वो ये सब सेटिंग कर रखा है. So all I need to do is कि भाई फोन पे ध्यान रखो कि वो आवाज आ रही है या नहीं आ रही है. अगर वो आवाज आ गई, then I will have to see. But in my experience over this past so many years, क्वार्टर में एक बार या 6 महीने में एक बार ऐसा होता है कि आवाज़ आती है. हाँ, और उस दिन अगर बहुत वॉलेटिलिटी हो गई तो आती है. तो इनफैक्ट आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि ट्रेडर के लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. एब्सोल्युटली. एंड मेरे लिए नॉर्मल नींद तो इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरे दोपहर की नींद इंपॉर्टेंट है. तो मैं रोज दोपहर को 2:30 से 3:15 सो जाता हूँ. इट्स लाइक अ पावर नैप फॉर मी. अच्छा. लंच कर लो बेटी के साथ एंड देन आई स्लीप. So yeah, I think that was a trigger, the last trigger for me that why look at manual trading, let's do algo trading itself. And parallel job was doing great. Unfortunately, because of that thing that happened to me, उसके थोड़े से और side effects होते हैं. So then there is a slip disc that happened to me. तो plus sitting hours long होते हैं. Corporate में तो if you're traveling in Bombay, आपको पता ही है कि यार रोड की कंडीशन क्या होती है. So then I was like, and again my office really helped me. They gave me a sabbatical as well for 3 months. मतलब normally corporate में sabbatical 3 महीने का मिलना at a leadership level बहुत difficult होता है. But our leadership team was very good. Allowed me. I came back, but I was trying to give my 100%, but could not. Then I said, यार, I am not able to do justice to the job. While I love it, I love the people over there. Then I said, okay, let's take a break. Plus, what I had heard from a lot of people is that when your kids are younger, that is the best time to spend time with them. Unfortunately, a lot of people in the corporate miss that period. And my daughter is 4 years old. And once she becomes 12, 13, she will have her own friend circles. Baba to hardly irrelevant hoga. But the 7-8 years are like very crucial years, right? So I love spending time with her. And then I was like, yeah, let's focus on her. So and focus on family, focus on health. So थोड़ा वर्कआउट कर लो हर दिन, थेरेपी कर लो, थोड़ा बच्चों के साथ टाइम बिता लो, वाइफ के साथ वॉक पे चले जाओ. पैरेलल ये चल रहा है. तो yeah, that is what I am doing right now. Almost I should not say retired, but yeah, you have created that space for yourself which is leading to a better retirement in future. Yeah, and I think the concept around having freedom. Freedom of time to do what you want, whatever you want to do. So दोस्त को मिलना है, दोस्त फ्री है. मतलब I remember the other day, it was a Wednesday and I thought कि यार मूवी देखनी है, मॉर्निंग शो देख के आते हैं. वाइफ वीकडे में तो वाइफ ने भी बोले चल छुट्टी ले लेती हूँ मैं, तो घर पे ही है.
So we went and watched Dhurandhar in the morning. So I have never ever thought in my life that on a Wednesday morning I can just go and chillax and watch a movie. And trade चल रहा है parallelly, which is ठीक है, वो तो चलते हैं. But यार, I mean that's This is crazy. Yeah. तो ये सीक्रेट अब आप आज बताइए सारा, है ना? ये तो मतलब अब हम लोग थोड़ा जेलसी जोन में भी जा रहे हैं. तो आई डोंट वांट टू मेक यू फील बैड अबाउट इट. सो चले सीक्रेट शेयर करिए. आई थिंक यू ऑलरेडी हैव मेड अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन फॉर अस. सो लेट अस टेक दैट प्रेजेंटेशन एज अ बेस एंड स्टार्ट आवर डिस्कशन. Absolutely. By the way, you are a very good human. I mean, I have seen 2 times you have thanked your company. Yeah. Which is very important. I mean, लोगों को थैंक बोलना चाहिए, पब्लिकली बोलना चाहिए. एंड ऑब्वियसली आपने अपनी वाइफ को भी थैंक बोला, तो इट्स गुड. आई लाइक द जेस्चर. Let's start the presentation. Yeah. and I think the people around me have been really instrumental. Yeah. My company, my family, even a lot of traders in different communities and mentors. You get to learn from a lot, like yourself. और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया है. तो I'm very grateful to all of them for making me a good trader. Superb. Yeah. Yeah. All right. Sure. So what I have got today for the audience is a strategy that I use in one of the portfolios. Okay. Okay. And it's called चैन की नींद strategy. As आपने कहा, trader के लिए नींद बहुत important है, especially given the geopolitics that is happening right now, right? कल कुछ डील हो जाती है, मार्केट गैप अप कर जाता है. मतलब who would have thought that Nifty can gap up 1200 points, or not even on a weekend, but on a weekday, right? And if you had call shots, only God will help you, right? And similarly, lot of things keep on happening overnight, and lot of people don't want to take risk on certain section of their portfolio. So what I have got over here is an intraday strategy. So it will take us entry in the morning and exit by 3:15. So no overnight positions, and it's a low risk options selling strategy designed to generate some alpha. So that's one. Now if I talk about strategy objective क्या है? So हमेशा ना एक ध्यान रखना होता है हमें कि हम कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. मतलब आप क्या चाहते हैं. आपको बहुत एक हायर ROI चाहिए, then you should be ready to take a higher risk as well, higher drawdowns as well. Do you want a moderate strategy or do you want a low risk, low return strategy? Over here, what I've defined in terms of risk management, it's a low risk, low drawdown framework. And while I am calling it a strategy, प्लीज डोंट इंटरप्रेट इट एज अ स्ट्रैटेजी की एग्जैक्ट रूल्स है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि यार इस तरह आपको सोचना है जब आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. जो नंबर्स डाले हैं मैंने उसमें वो आप चेंज कर सकते हैं, आप बैक टेस्ट करिए, खेलिए उसके साथ, बट आप एक फ्रेमवर्क पे ध्यान दीजिए कि कैसे करना है आपको. So low risk, low drawdown framework to protect capital while generating alpha returns. The other thing that we'll also do is that we will try to use our capital efficiently. Because इस strategy में low risk है और low drawdown है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास mutual funds है, debt funds है, and market allows you to pledge that and get some margin for trading. So that is what we are going to do over here by pledging our mutual funds and debt funds. So right now I have kept a very small capital allocation, only 6 lakhs, which is 2 lots to trade for a straddle or a triangle, 3 lakhs each. मैं क्या करता हूँ कि यार डेट फंड में I keep around say 3.2 lakhs. 94% हमको मार्जिन मिल जाता है after 6% haircut, so I get around 3 lakhs margin available. So and then for equity I keep around 4.5 lakhs. Now the point over here is that ट्रेडिंग के लिए 50% margin should come from your cash component, 50% should come from your non-cash component. So non-cash component is the equity mutual funds. Typically equity mutual funds पे आपको 80% margin वापस आ जाता है, 20% haircut होता है typically. What I've kept is 4.5 lakh to pledge so that you get around 3.6 lakh of margin. आपको चाहिए 3 लाख ही. मैंने 3.6 lakh इसलिए रखता हूँ मैं because market आज ऊपर हुए. It might happen that market may go down. Your mutual funds may lose value. टुमारो इट शुड नॉट हैपन कि म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू इतनी लूज हो गई कि आपके पास मार्जिन ना है ट्रेड लेने के लिए. सो वो मनी मैनेजमेंट करने के लिए मैंने थोड़ा बफर रखा है. ठीक है, ताकि म्यूचुअल फंड अगर 20% से भी गिर गए तो भी आपको 3 लाख का मार्जिन मिल जाएगा. एंड उसके ऊपर गिरता तो आपको फिर कैश डालना पड़ेगा. बढ़िया. अच्छा,
Principles. But you need, sorry to interrupt in the middle, but you will need cash also for mark to market. Yes, which I have covered in the future. Yeah. The next slides. Yeah. Absolutely. So again, whenever you make any strategy, you should have some core principles or some core ideas about the strategy. कि यार, what is the idea that my strategy is going to leverage? Now this idea कहाँ से आते हैं? Typically observe the markets, you read about the market, you understand the concepts, right? Now one thing that anyone trading in the markets for some time would know that कि market typically tends to remain sideways 60 to 70% of the times. मतलब market sideways ही होने वाला है, non directional होने वाला है 70% of times. Can I take advantage of this truth that I know from the market? ठीक है. The other thing I know is कि थीटा डीके जब आप करते होता है ऑप्शन सेलिंग में, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. मतलब आज मैंने ऑप्शंस बेचे हैं, अगर नेक्स्ट 5 दिन NSE BSE सब बंद रहा तो भी डीके तो होना ही ऑप्शन में, वो तो होना ही, वो अल्टीमेट ट्रूथ है. थीटा डीके होने वाला है. ठीक है. इफ द मार्केट डजंट वर्क ऑल्सो, सो आई कैन शॉर्ट straddles or strangles and I can capture premium erosion provided the market remains sideways. ठीक है. So now how do I use this is कि anyone who has understood about option Greeks and if you understand theta decay कैसे होता है, तो typically एक option में pricing में there is intrinsic value, there is time value, right? Now the time value decays over the period of time toward and at expiry it is 0. ठीक है. But ये decay जो होता है that is not linear. It happens slowly in the start, but as you approach expiry, it expedites, right? Correct. So the decay that you will get on DT0, which is on the day of expiry, would be the maximum. उसके थोड़ा सा कम जो होगा वो DT1 पे होगा. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू मैक्सिमाइज ऑन माई थीटा डीके बिकॉज माई स्ट्रैटेजी इज अ नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, DT1 एंड DT0 विच इज मंडे एंड ट्यूसडे आई विल ट्रेड इन निफ्टी. ठीक है. नाउ द गुड थिंग इज Sensex expiry is also there, which happens on Thursday, and the gap between Nifty and Sensex expiry is 2 days. So I can play DT1, DT0 also on Sensex, right? I am not doing monthly options over here because मुझे मंथ में एक बार ही कोई ऑप्शन 0 होगा. यहाँ पे मंथ में 4 बार होंगे, एक्चुअली 8 बार होंगे, बस निफ्टी पे सेंसेक्स भी है. तो माई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंक्रीजेस. सो दैट इज हाउ आई एम ऑप्टिमली टाइमिंग द मार्केट्स. एंड देन रिस्क मिटिगेशन में क्या, इट्स एन इंट्राडे पोजिशन, नो ओवरनाइट एक्सपोजर. व्हाट आई ऑल्सो डू इज आई एम डूइंग 2 लॉट्स, सो आई एम डाइवर्सिफाइंग. मेरे एक ऑर्डर में दोनों लॉट की एंट्री नहीं जा रही है. मैं थोड़ा टाइम स्पेस कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिले. सिंस आई एम डूइंग अ फिक्स्ड प्रीमियम, मुझे पता है कि अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, जैसे अगर मैं सोचो कि मैं अगर 100 रुपये का कॉल था, 100 रुपये पुट शॉर्ट करता हूँ और मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया से 30% का दोनों लेग पे, तो मुझे पता है कि अगर 100 पे एंट्री मिली है तो 130 पे एग्जिट हो जाऊंगा मैं. तो 30 रुपये का लॉस मुझे कॉल में आएगा और सपोज मार्केट नीचा पहुंच जाता है, पुट भी ले लेता है, तो 30 वहां गया, तो मेरा 60 रुपये का लॉस इज द मैक्सिमम typically that I'll get. Correct. उसके ऊपर मेरा लॉस नहीं जा रहा. Right. And I want, as a trader, my first aim is to preserve my capital. And I don't want very big drawdown days. Single day losses नहीं चाहिए मुझे बड़े. तो मैंने वो कर दिया. अगर आप ATM करते हो तो होता क्या कि जब आपका विक्स हाई होगा, वॉलेटिलिटी हाई होगी, तो वो ATM शायद 200 में बिक रहा है. आपने 30% स्टॉप लॉस लगाया होगा, 60 रुपये कट गया आपका. इस दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, 300 में बिक रहा है अगर सपोज, तो आपका 100 रुपये कट रहा है. और जब वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई तो शायद तो 70 में बिक रहा है, तो आपका प्रॉफिट लॉस बहुत कम हो रहा है. तो ये एक वेरिएशन आ रहा है मेरे मैक्स ड्रॉडाउन्स में, मैक्स लॉस डेज में, विच आई डोंट वांट. आई वांट कि यार मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम एक्सपोजर कितना है नेगेटिव जाने का उस दिन में, तो इसलिए मैं एक फिक्स प्रीमियम शॉर्ट कर रहा हूँ. ओके, ठीक है. अच्छा, अभी स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या है या फ्रेमवर्क क्या है. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सी और पी शॉर्ट कर रहा हूँ 75 रुपीज़ का, जो भी 75 के नज़दीक है मॉर्निंग में, मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ. कब कर रहा हूँ, एक सिंपल टाइम ले लिया मैंने, सुबह के 5 मिनट की कैंडल जो है उसको मैंने छोड़ दिया, बिकॉज बहुत ही वॉलेटाइल होता है वो. 9:20 से 9:25 के बीच में कोई भी एक टाइम ले लो. ऐसा नहीं कि 9:22 जहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको मिलता है कि अगर 9:23 पे बहुत अच्छे वर्क हो रहा है, 9:22 पे वर्क नहीं हो रहा है, तो आपने कर्व फिट किया उसको, वो आप प्लीज़ उसको साइड में रखिए. कोई भी एक रैंडम टाइम ले लीजिए और उसको आप बैक टेस्ट करिए.
अब मैंने क्या किया, मैंने एक 50% स्टॉप लॉस लिया, मैंने थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस लिया ताकि मैं चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ा मूवमेंट तो मिले, रूम तो मिले मूव करने के लिए. And what I do is कि I don't want again a big loss on a day. So as soon as my stop loss is hit on one leg, I will move the stop loss of the other leg to cost. जैसे कि अगर मैंने 100 रुपये का कॉल और 100 का पुट बेचा है, अगर मार्केट ऊपर जाता है और मेरा स्टॉप लॉस 150 का है, तो कॉल लेग तो चला गया. मेरा जो पुट स्टॉप लॉस था जो 150 पे था, मैंने उसको 100 पे मूव कर दिया ताकि मैं उतना भी मार्केट को ना दूं. बिकॉज मुझे कम रिस्क लेना है. ठीक है. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग एंड आई विल एग्जिट ऑल द पोजीशंस व्हाटएवर दे आर ओपन एट 315. तो इंट्राडे प्योर. व्हाट आई आल्सो डू इज सेम लॉजिक और एक लॉट करूंगा मैं एनी टाइम बिटवीन 925 टू 930. अभी मैंने यहाँ पे 929 लिया है, तो थोड़ा डाइवर्सन मिल जाता है, थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाता है हमको. एंड बाकी रूल्स रिमेन एग्जैक्टली द सेम. This I will do on Monday and Tuesday for Nifty. For Sensex, same rules. Given that Sensex is 3x that of Nifty in terms of value, मैं 75 के बदले 225 कर रहा हूँ. Okay. ठीक है. And same logic लगा रहा हूँ और कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ इसमें. ठीक है. So DT1, DT0 हम खेल रहे हैं, फिक्स प्रीमियम्स कर रहे हैं एंड कॉस्ट बेस्ड स्टॉप लॉस है, तो कैपिटल को प्रोटेक्ट रहेगा. ज़्यादा कैपिटल जाएगा, मतलब जितना है उतना ही जाएगा. Okay. अच्छा, अभी इसका हमने बैक टेस्ट किया है. नाउ डेटा अवेलेबल इज फ्रॉम 14th August टू ऑलमोस्ट टिल yesterday, till 6th of Feb. Sorry. Now the margin for the strategy is around 6 lakhs, which is over here. Let me just point it. 6 lakhs. Now let's see the result analysis of this. Okay. Now strategy wins typically on 60% of the days. 40% loss है. So it's a decent win ratio. Good. Average monthly profit in this past 2.5 years is around 15,700 rupees. One thing I will mention that the slippage that I have considered for both call and put is around 0.8%. Okay. From whatever my experience has been in the markets, मुझे typically 0.5% का slippage मिलता है निफ्टी सेंसेक्स सब मिला के on an average level पे. Okay. But मैं ज़्यादा ही slippage रखता हूँ back test करते वक्त because I'm a conservative trader. I am happy to see a bad back test and get a good output versus the other way around. Yeah. So that's the profit. This is the most important parameter for me, which is drawdown. It's around 23,000, which means 6 लाख पे around 4% का ड्रॉडाउन आपको दिखा है अप्रोक्सीमेटली. अच्छा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन डेज भी खाली 41 डेज है एंड 20 दिन में रिकवर भी कर लिया है उसने. इसका मतलब क्या हुआ? सो बेसिकली 41 डेज इज कि आपकी स्ट्रैटेजी कितने दिनों तक ड्रॉडाउन में रही. मतलब सोचो कि आप इक्विटी का हाई आपके स्ट्रैटेजी ने ले लिया, उसके बाद उस इक्विटी को वापस मिलने के लिए कितना दिन लग रहा है. तो आपने सपोज प्रॉफिट देख लिया 1 लाख रुपए का पूरी स्ट्रैटेजी में आफ्टर सो मेनी डेज, देन इट स्टार्ट गिविंग लॉसेस प्रॉफिट व्हाटएवर, एंड देन अगेन इट हिट 1 lakh 1 rupees से आफ्टर 41 days. दैट इज द मैक्सिमम ड्रॉडाउन डेज. बिकॉज बहुत लोग ऐसा होता है ना कि यार मेरे को स्ट्रैटेजी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा दे, लोग बोलते हैं ऐसा. मैं नहीं, मतलब नॉट रिक्वायर्ड एज सच, बट या. तो 41 और 21 डेज में क्या डिफरेंस? 21 डेज इज कि जब उसने मैक्सिमम ड्रॉडाउन हिट किया, जैसे कि इस बार क्या हुआ है कि 5th March को आपका लॉसेस शुरू हुआ, फिर लॉस प्रॉफिट हो रहा है, बट आपका कर्व जो नीचे जा रहा है. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने मैक्सिमम ड्रॉडाउन हिट किया, विच इज 23,400 रुपीज का लॉस हुआ, उसके बाद 21 दिन लगे उसको अच्छा रिकवर होने में. समझ गया मैं. तो बहुत बार ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी टिपिकली कितनी जल्दी रिकवर करती है. बिकॉज टिपिकली मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू सी प्रॉफिट नॉर्मली, राइट? सो दैट इज वन पैरामीटर. And then there is a max loss, which is of 6 lakh is around 1.5%, or 1.7% types. So this is there. What you also see over here is the losing streaks. And this is one thing that I would like to tell the audience is your strategy may have a 60% win ratio. So you might think, yaar, in every 5 trades that I take, 3 should be profitable and 2 should be loss making. But statistically, that number 5 is very small. It's irrelevant. People say that you should give time for the edge to play out, which means over 100 trades you should see how the strategy has performed, right? So ऐसा भी हुआ है कि 4 लगातार losses हुए हैं in this 2.5 years, और वो 3 बार हुए हैं. ऐसा भी हुआ है कि 5 लगातार दिन आपको losses देखे हैं, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और मंडे लॉस ही लॉस दिख रहा है आपको. ऐसा एक बार हो चुका है. तो ऐसा नहीं है कि 60% है तो मतलब और ये चलता रहेगा. तो दैट इज़ वन थिंग वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, बिकॉज इट्स ऑल स्टैटिस्टिक्स एट द एंड ऑफ द डे. सो आई थिंक एज अ ट्रेडर, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट
trading is all about data and probability. Oh. That is when the real trader comes out. Otherwise, it's all gut based and emotion. So statistically, it's very important to look at numbers. Also, one disclaimer: these are back tested results. Actual results may vary. Not necessary कि अगर बैक टेस्टिंग में उसने ये दिया है तो वो 100% वो स्ट्रैटेजी काम करेगी ही मार्केट में. You need to have a probabilistic approach towards markets. बट ये तो आपने तो स्लीपेज को 0.8% कंसिडर कर ही लिया है. तो ये तो प्रोबेबिलिटी बढ़ा ही दिया आपने इसका. हाँ, absolutely बढ़ा तो दी है. But you never know that. I would show strategies. For example, I do bank nifty buying as well. So typically I'm an option seller, but 10 to 15% of my portfolio also into buying. There are some strategies I have been doing for bank nifty, and when I back tested that, fantastic result. मतलब लग रहा था कि मतलब ये तो मतलब होली ग्रेल ही मिल गया है. And थोड़ा कर्व फिटिंग भी था उसमें, but for the past 7 months bank nifty buying has been in drawdown. And जो हमने historical drawdown देखा है उसका 1.5 टाइम्स पहुंच गया है वो. सो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो देखा है वो होगा ही होगा. एंड हेंस यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर स्ट्रैटेजीज. इंटरेस्टिंग. तो आपने ये लाइव कर रखा है? ये नहीं है, और स्ट्रेटजी है जो मेरी लाइव चल रही है. तो आई कैन शो यू द पोजीशंस दैट आर देयर. आल्सो यहाँ पे ना एक पॉइंट देखिए, हम एवरेज डे प्रॉफिट अराउंड 1100 रुपीज़ है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन 1100 का प्रॉफिट होगा. बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये ऐसा है कि हर दिन मुझे 1000 रुपये मार्केट से मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है. यू शुड लुक एट द रिजल्ट्स, लुक एट इट फ्रॉम अ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. टिपिकली स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है समझ लीजिए. 70% ऑफ द टाइम ये स्ट्रैटेजी आपको -2000 से +2000 का पीनल दिखाएगी. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको -2000 3-4 बार लगातार आ जाएंगे, आप बोलेंगे स्ट्रैटेजी चलना बंद हो गई. ऐसा नहीं है. गिव द स्ट्रैटेजी इनफ टाइम of instances to play out. Sure. So अभी आज obviously आपका ट्रेडिंग लाइफ है, राइट? तो अभी क्या स्ट्रैटेजी आपका चल रहा है, क्या एल्गोरिथम चला रहा है? So अभी DT1 है तो मेरे most of the positions are in Sensex. Okay. And I do lot of overnight trading as well. So I do overnight STBT हो गया, BTST हो गया. I'll also hedge my open positions. That is very important. And there are ATM shorts, OTM shorts that are there with some fixed stop losses. So if you want, I can just go to my. Typically मैं मेरा P&L नहीं देखता हूँ live market में because there is no actionable whatever I have told. ये तो चल रहा है. If you see right now. But these are not intraday strategies. ये पोजीशन कैरिड थे पिछले उससे? नहीं, ये मैंने आज पोजीशन लिए हैं. Okay. And they will continue till tomorrow. Tomorrow they will square off. And then tomorrow also I'll do some intraday trading for the expiry for Sensex. अच्छा, तो इसमें आपको मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक सेट पकड़ते हैं जो आपने ट्रेड किया होगा, बताइए आप कोटक यूज़ कर रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है. क्यों ऐसा कोटक के यूज़ कर रहे हैं? Okay, so trading is a business, right? In business, you want a partner first who is reliable and also who is cost efficient. Now, especially now with the STT news that has happened, this will all add to our cost. And margins are thin over here. ठीक है, तो हमको आपकी cost limited रखनी है. Kotak from the start has been a broker who has charged low brokerage. In fact, recently, I think in November, they made their API trading free. But I have been a Kotak user for like 3-4 years. Yeah, 3 years now. तो क्योंकि आप API यूज कर रहे हैं, हाँ, तो मेरा तो आपका तो कोई ब्रोकरेज नहीं लग रहा है. मैं ब्रोकरेज पर STT तो ले रहा है गवर्नमेंट. So yeah, and that will kick in from April. So चलो देखते हैं अभी अप्रैल से होगा. अरे कुछ तो ले ही रहा है, अप्रैल से तो बढ़ा है. तो बढ़ा है, absolutely. चलिए तो ट्रेड देखते हैं. सो इनफैक्ट विवेक जी, अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये आपने क्यों शॉर्ट किया ना, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा. बिकॉज मेरे इस टाइम पे एज ऑफ नाउ अराउंड 25 अल्गोस चल रहे हैं. हर एक अल्गो ने एक अलग पोजीशन लिया हुआ है. किसी ने ATM किया, किसी ने OTM किया, किसी का स्टॉप लॉस अलग है. तो मुझे आप बोलेंगे कि ये लेग कहाँ से आया, मुझे नहीं पता होगा. आई एम सो सॉरी. तो हाउ डज इट वर्क? लाइक आपने एल्गो के सॉफ्टवेयर में डेवलप कर रखा है?
So there are many platforms that are there. So there is a platform like Quantiply that I use extensively. There is TradeTron. अच्छा, और भी बहुत सारे platforms है. तो वहाँ आपने कोड कर लिया अपना? नहीं, तो in fact the good thing is these platforms, I use Quantiply a lot, and you don't need to code. I mean just आपने backtest कर लिया strategy को, logic लगा के वही logic आप डाल देंगे, literally 3-4 मिनट में strategy बन जाती है जो आपने backtest की होगी. और उसको लाइव कर दिया ब्रोकर? बस ब्रोकर कनेक्ट कर दो, API कनेक्ट कर दो आप, वो सारा क्वांटिफाई कर देता है? हाँ, सारा कोई भी आप जो लोगे आप, बहुत सारे टूल्स होंगे, आपको मिडलवेयर काफी आ गए। एब्सोल्युटली। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये अब वो मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, हुआ नहीं है, ये करना चाहे तो कर सकता है कोई भी। इनफैक्ट आई वाज doing a full-time job without ever looking at the charts, and I became profitable because I was not looking at the charts. I'll tell you that. Yeah. And it's a hectic job, right? Corporate में जब आप leadership level पर रहते हो तो it's a hectic thing. But अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ट्रेड्स चल रहे हैं, मैं नहीं दिख रहा हूँ. So I think that's a boon that has happened with algorithms coming into the market. Very good. So एक अच्छा लर्निंग हमको मिला है कि अगर आप ट्रेडर हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो एल्गो ट्रेडिंग सीख सकते हैं. ये वीडियो में भी हम कोशिश करें सिखाने की, और भी बहुत सारे वीडियो इस तरह के रिकॉर्ड किए हुए हैं जिससे आप सीख सकते हैं. और ये जो इंटीग्रेशन का काम है ना कि ब्रोकर वर्सेस आपका सिस्टम, ये आजकल इजी है, पहले जैसी बात नहीं रही. और स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट भी इजी हो गया थैंक्स टू LLMs कि आप स्ट्रैटेजी कोड भी कर सकते हैं, इजी हो गया. ठीक है, जैसे किसी ने ट्रेडिंग व्यू के अंदर में कुछ बना लिया, कुछ इंडिकेटर, अब उसको ब्रोकर का टर्मिनल में डालना है, तो वो बहुत स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है. एब्सोल्युटली. एंड इनफैक्ट इफ यू सी, मेरे ओपन ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं. तो ये तो मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ये सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स है. तो मेरे अल्गो ने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल के रखा है, देखो यहाँ पे. आपको डर नहीं लगता कि रोबोट काम कर रहा है, गलत कर दिया तो, उल्टा पुल्टा मार दिया तो? स्टार्टिंग में देयर वाज सम अमाउंट ऑफ एंजाइटी, बट it has changed my life for the past so many years. I've been doing it now. I trust the system and I know that when an error happens, I'll get a notification. तो नोटिफिकेशन कौन सा सिस्टम देता है आपको? So क्योंकि एरर तो इस टर्मिनल पे होगा, टर्मिनल आपको नोटिफिकेशन करता है क्या? So for example the middleware software जो है, उसको ब्रोकर से जाएगा एक मैसेज कि ये एरर आ गया है, जो सेल लेग था वो स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाया. Then that thing configured है to my mobile number and to my Telegram account. अच्छा. So I get an error over there. अच्छा. So in some platforms you get a call कि the strategy has gone into an error, please check. And in some you get a notification कि, and I have put an alarm sound over there. अच्छा. Then just see over there, अच्छा error आया, देखते हैं क्या हुआ है. Then you talk to the support over there कि भाई error आया है, क्या हुआ है issue. Then they will see कि problem क्या है, and you can square out the positions. बहुत अच्छा. So ये कौन सा टूल है? So again, Quantiply, TradeTron, all these, absolutely. So since they are selling algorithms or the way to deploy algorithms, they need to do that because consumer क्या समझेगा कि यार error आया है. ठीक है. So as a retail trader now it's really very. तो आप सब्सक्राइब करते हैं Quantiply वगैरह? उसका पैसा देना पड़ेगा? Absolutely, it's a cost. It's a business cost. It's a business cost. Any subscription you have to accept. Absolutely. In fact, learning also it's a business cost. You are just empowering yourself, right? Exactly. I remember I read a quote outside in your office that you are your biggest asset. So I mean, invest in yourself. Of course. Let's look at the P&L and the financials of the strategy. Okay. We had equity mutual fund में around 4.5 lakhs. ठीक है. Around debt में 3.2 लाख, जिसका मार्जिन हमको ये मिला. बफर रखा है हमने 60,000 का, बिकॉज कैपिटल जो ड्रॉ डाउन दिखाया था वो 24,000 का था, तो मैंने इसका 2.5 टाइम्स पकड़ लिया है अप्रॉक्सीमेटली फॉर मार्क टू मार्केट एंड वॉट एवर ड्रॉ डाउन यू फेस. सो टिपिकली यू हैव gone with around 8.3 lakhs of total capital. This is the typical ROI that you generate from an equity mutual fund of around 12% from equity mutual funds in a long term level, and debt mutual fund around 6%. Total annual ROI is this. ये जो है, जो हमारा 15,700 का जो नंबर था, उसका into 12 ये नंबर है. इतना थोड़ी ना आएगा. 15,700 इतना रिटर्न नहीं आएगा, थोड़ा मान के चलिए कमी आएगा. हाँ. So what you can do is, typically what I do is when I look at the number, मैं उसको 70-80% पकड़ता हूँ. Okay. ठीक है. But the good thing is that we have considered slippage of 0.8%. Typically मुझे आता है 0.5 in the past whatever years I have done, but we have considered a higher slippage. ठीक है. ठीक है. So ये है. Costs include your brokerage cost. I have considered a broker which gives you 5 rupees per order, and there are many brokers right now. Kotak तो charge करता ही नहीं है, तो you can definitely look at that as well. Plus algo execution cost, which is the platform that you will look for the deployment, plus STT, GST, etc.
दिस इज द नेट ROI दैट यू सी आफ्टर द कॉस्ट. तो ये आपका अराउंड 2.19 lakhs है. तो प्री टैक्स जो है अराउंड 26% है, 12% इस पे, 6% इस पे, और ये टोटल जो भी था इसका टोटल नंबर. तो दिस अपॉन दिस इज अराउंड 26%. समझ गया. टैक्स पकड़ लीजिए आप, जो 12.5% आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स आएगा इसके ऊपर. और इसके ऊपर एज्यूम किया है मैंने कि जो ट्रेडिंग कर रहा है उसको 22% पर्सनल इनकम टैक्स लगने वाला है. इट कैन बी 30%, इट कैन बी 0% एज वेल, डिपेंडिंग ऑन हु इज ट्रेडिंग. इफ यू आर डूइंग इट इन योर HUF अकाउंट और समवन हु इज नॉट वर्किंग, उनके अकाउंट में कर रहा है तो टैक्स तो 0% है 12 लाख तक. तो उस तरह ये टैक्स वेरी हो सकता है. बट मोटा मोटी वॉट यू सी इज प्री टैक्स यू गेट 26, पोस्ट टैक्स यू गेट अराउंड 21%. एंड यू कैन कंसिडर कि यार 70-80% आएगा. बट दैट ऑल्सो इज अ गुड रिटर्न पोस्ट टैक्स लेवल पे फ्रॉम द बैक टेस्ट. ठीक है. सो वॉट आई टिपिकली डू इज आई टिपिकली बैक टेस्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, look at the number, look at the cost also involved over there, and then see does it meet my objective in terms of my risk and my return objectives. If it does, I implement that. What's your CAGR approximately, if I ask you? So last year from algorithmic, it was around 40%. Okay. The last financial year I'm talking about. This financial year, it was around 32% before the gap up. Okay. When the gap up happened, market blessed me. It's now at around 42%. अच्छा. So yeah. Gap up was good for you. Yeah. But आप तो short करते हैं. So I also buy hedges. Okay. And many a times I buy hedges despite no shorts in my portfolio. Okay. तो मेरे hedges थे, OTM थे मेरे. आई हैड ऑप्शंस. अब मुझे स्ट्राइक पता नहीं बिकॉज मैं मार्केट देखता नहीं हूँ, बट आई रिमेंबर दैट इट वॉज एट अराउंड 5 rupees आई हैड बॉट अराउंड व्हाट क्वांटिटी, अराउंड 5 rupees, अराउंड 3000 quantity, and it got squared off the next day morning at around 3:15. So But that will be against the short, no? no. So Hedges. आप long करके गए थे खाली. हाँ. So okay. So I'll tell you. हाँ. What happens now in lot of platforms is that platforms can't see आपके कितने शॉर्ट्स खुले हुए हैं. Okay. ठीक है. तो अगर मैं स्ट्रैडल बेच रहा हूँ मॉर्निंग से, सपोज कॉल के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मेरे कॉल तो सिस्टम में नहीं है, पुट सिस्टम में है. बट मैं जब ओवरनाइट लेके जाता हूँ तो मैं तो हेड्स तो लेता ही हूँ. ठीक है. कायदे से मैंने खाली पुट कैच लेने चाहिए, वो मेरे पुट ही शॉर्ट पड़े हुए हैं. ठीक है. बट अल्गो प्लेटफॉर्म्स को जो मैं यूज़ करता हूँ उसको नहीं पता चलता कि मेरे कितने कॉल्स खुले हैं, कितने पुट्स खुले हैं. मैं क्या करता हूँ कि अब मैं हर दिन 3:25 को तो नहीं दे सकता कि कितने खुले कितने नहीं खुले और करो. तो मैं बोलता हूँ कि यार जितना मेरा स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम नंबर है ऑफ शॉर्टिंग, मैं उतने कॉल्स और पुट्स 500 पॉइंट दूर के निफ्टी में बाय कर लेता हूँ. अच्छा. बाय कर लेता हूँ. इट्स अ कॉस्ट. ठीक है. And this is a very important concept. I learned it when I was reading a book by Nassim Taleb, and he mentioned that like in high risk scenarios, like for example, अगर आप एयरपोर्ट पे हैं, राइट, फ्लाइट ले रहे हैं, तो आपकी चेकिंग 3-4 बार होती है, राइट. आप जब घुस रहे हो तो आपको सिक्योरिटी गार्ड चेक कर रहा है, फिर आप बैगेज जा रही है आपकी. अच्छा, कभी कभी तो जब फ्लाइट में घुसने से पहले चेकिंग होती है, प्रॉपर पूरा बैग खोल रहे हैं, एक्सटेंशन जा रहा है. वर्सेस जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो हार्डली कोई चेकिंग होती है, बट द रिस्क इन्वॉल्व इज वेरी हाई. नाउ द एयरपोर्ट अथॉरिटीज, for them this is a redundant cost, assuming that everyone is not a terrorist and everyone is good, but they are spending that cost because the risk is very high. So when the risk is very high, you may have to have redundancy or redundant cost in your system, so that in case if there is some bad thing that happens in the market, you are there. And hence I always cover or take a hedge against my position. The only issue is that my algo does not know how many calls and puts are short. I take the maximum quantity because I want a peaceful sleep at night. So मेरे कॉल शॉर्ट नहीं थे, एंड अल्गो ने वो कॉल खरीद लिया और रोज खरीदता है वो, एंड वो कॉस्ट मैं बेयर करता हूँ. मेरा लॉसेस होता है, हर दिन लॉस होता है मुझे उसमें, बट वन फाइन डे इट कम्स बैक एंड गिव्स यू अ नंबर. एंड on that day I hit a 1 million का नंबर. So that was the profit on that day.
बट या इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, सो प्रॉफिट लॉस हो सकता है. Correct. It's okay, yeah. Interesting. That's a good return you have generated. 42% is not a low. This is pre-tax, obviously. This is pre-tax, absolutely. This is pre-tax. It's not a low return which you have Yeah, generated. Yeah. तो आप कितने strategy चला रहे हैं parallelly? You said Around 25 to 30 depending. 25 strategies. Yeah. 25 स्ट्रैटेजी है, आपको 25 स्ट्रैटेजी करना है, Yeah. 75 लाख लगेंगे. अगर आपने थोड़ा हेज कर लिया तो थोड़ा मार्जिन और कम हो जाएगा. Interesting. और obviously I keep a lot of buffer also. So what do you think? What should be the minimum capital required for anyone to become a full-time trader? Job Full-time छोड़ trader? के सब कुछ कितना कैपिटल के बिना ये नहीं करना चाहिए? I think before the capital, I think it's about कि आपको पास process है या नहीं. Because like in corporate, what we do is we do a pilot, right? देखते हैं pilot successful है क्या. अगर लगता है then we put in the capital to scale it up. Sure. तो first आप एक pilot करिए and come with at least 5 lakhs ताकि आप 2 straddle कर पाएँ, 2 strangle कर पाए, देखें कैसे हो रहा है, and then slowly आप scale up करें. अच्छा अभी कितना अमाउंट चाहिए आपको ताकि आपको लगे कि मैं secured हूँ, that is depending on your expenses. Of course. So अगर मुझे लगता है कि मेरे महीने के एक्सपेंसेस फैमिली के 2 लाख हैं सपोज, ठीक है, तो और अगर मेरा कैपिटल से 1 CR है, और मैं अगर 20-25% निकाल पाऊंगा पोस्ट टैक्स, मेरे एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं. अच्छा अच्छी बात अगर वो भी होगी कि सपोज अगर आप ये कब का स्पाउस जो है वो भी अगर अर्न करे तो इन माई केस माई वाइफ इज ऑल्सो एन MBA, शी ऑल्सो अर्न्स. अच्छा. So then the expenses are getting managed. I mean, there's no. So सही then बात you need to. You can have your time freedom, right? So that is how it is. So depending on your expense. Important to have a alternate source of income also to run the family. Otherwise, if you are only running a family based on trading income, it can become risky. This section I wanted to cover on how I use AI in my trading. AI is a very interesting topic, right? For the past 2 years, the kind of disruption it has caused in the market across industries has been crazy. And I am trying to understand what is the potential for AI in trading, in my day-to-day trading, which I can apply. So I have put down 3 situations that where I actually use AI in my trading. Okay. So the first situation actually is AI as my trading buddy and coach. And this is a real example, and I think most of the traders will agree with me that trading is a very lonely professional. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आपको आपके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स दोस्त तो बोलते हैं मत कर ये गैम्बल है या वट एवर. नाउअडेज समवन कॉल्ड इट सट्टा आल्सो इन अ बिग फोरम, राइट? सो इट्स अ लोनली प्रोफेशन, यू डोंट टॉक अबाउट इट. अच्छा होता क्या है कि जब प्रॉफिट होता है तो हम चलो दोस्तों से बात कर लेंगे, देखो प्रॉफिट हो गया. बट जब लॉस होता है और जब काफ़ी टाइम लॉस होता है, देन यू गेट इन अ कुकून, राइट? यू डोंट टॉक टू पीपल. घर वालों से भी क्या ही बात करोगे, लॉस कर रहा है ये. So the toughest part is not strategy, but it is the mind. So what I realized is, and when initially I used to have bad phases as well, I used to talk to AI a lot. So while I also talk to my wife and she understands me, so as to get a perspective from a trader's point of view. And see, right now AI over here is the smartest thing on the planet, the smartest. Maybe a doctor, smartest engineer, also smartest trader, because it has the knowledge of all the traders. You just ask him, think like a profitable trader, and it will come back to you with all the solutions. And I have to talk to it, यार कि ये loss हो रहा है, ये drawdown हो रहा है, and it will tell me answers basis my personality, and that I loved it. So example, जब algo trading करता हूँ मैं, पहले क्या हो रहा था ना, जैसे आज तो मैं PNL नहीं देख रहा हूँ. Before I used to see my PNL और M2 में every 30 minutes कि क्या हो रहा है. अच्छा कोई actionable है नहीं, बट वो PNL देख के मेरा ऊपर नीचे हो रहा है कि अच्छा अगर PNL दिखा रहा है +1 लाख एंड 2 घंटे बाद चेक कर लिया ये तो -50 पे आ गया, हो सकता है. फिर अब मेरा माइंड ना स्टक है 1 लाख पे और मेरा दिन जा रहा है खराब. एंड मेनी अ टाइम्स यू वुड नो द आंसर, बट सिंस यू आर इन द गेम यू कांट सी द बिग पिक्चर. आई जस्ट स्पोक टू ChatGPT, ठीक है, act like a trading coach and help me understand this. मैंने इनफैक्ट कस्टम GPT बनाया था of a trading buddy, and it told me यार it's like यार
Vaibhav, you know that you are an algorithmic statistics trader. This thing that you are seeing right now is irrelevant. Day-to-day PNL or day-to-day MTMs are irrelevant because statistically your number valid ही नहीं है. Look at it over a long-term period. And what it told me is that your job as a systematic trader is about execution, not the output. It's about the input. And when someone tells you that, it really opens your mind. Initially, what used to happen is when you used to make losses or bad phases, you will talk to traders, and typically in your community, most of them would be loss-making traders. तो उनको ही पता नहीं क्या करना है, वो भी आपको गलत सलाह दे रहे हैं. अभी आपके पास एक एक्सपर्ट आ गया है जो आपको गाइड कर सकता है. तो फ्रॉम गाइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड AI works like a charm. So especially because it now understands me, given the discussion that have happened with AI. So as a trading buddy and coach is one application that I do. And I'll request a lot of people or trading community people who are going through, say, emotional challenges in trading, talk to AI. It will guide you. Any kind of emotional challenges. Absolutely. Yeah. In fact, the number one use case now of AI is emotional support. Yeah. The second application that is there is from an accelerated learning point of view. कि learning को तेज कैसे किया जाए. And I read a lot of books. And I also follow a lot of international algo traders, systematic traders. Okay. जैसे पेरी कॉफमैन हो गया या रॉब कार्वर हो गए, केविन डेवी हो गए, तो उनके बुक्स पढ़ता हूँ मैं. होता क्या ना, बहुत बार जो कॉन्सेप्ट्स बताते हैं वो, बिकॉज दे आर मैच्योर इन देयर ट्रेडिंग जर्नी, द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी डेंस, मतलब बहुत थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं एंड थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं. अच्छा, बहुत बार मुझे समझ नहीं आते वो क्या है. द सिंपलेस्ट सोल्यूशन इज उन कॉन्सेप्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, AI पे अपलोड कर दो, ChatGPT पे डाल दो, जेमिनी पे डाल दो, ग्रॉक पे भी डाल दो, बोलो कि समझाओ मुझे, समझाओ लाइक यू आर पेरी कॉफमैन एंड यू आर टीचिंग मी एंड आई एम योर स्टूडेंट, आई एम योर मेंटी, यू आर माय मेंटर, एक्सप्लेन इट टू मी. Many times I get PDF अपलोड कर देता हूँ. The kind of output you get, it's like having a world-class mentor of that personality teaching you and also telling you how to apply that in your trading journey. So in fact मैंने बहुत सारे पर्सोनास क्रिएट करके रख दिए हैं मेरे GPT में कि पेरी कॉफमैन का पर्सोना है, केविन डेवी का पर्सोना है, तो that helps me a lot. And last application is AI for strategy analysis. Lot of times you will have strategy results that will come to you. जैसे कि सपोज हम strategy एनालाइज कर रहे हैं, हमको दिखा कि इसका ड्रॉडाउन जो है अप्रॉक्सीमेटली 10% है. फिर आपने क्या किया, आपने थोड़ा टाइम चेंज कर दिया, थोड़ा स्टॉप लॉस चेंज कर दिया, थोड़ा हल्का ही चेंज किया है, अभी ड्रॉडाउन आ गया 5%. बट एक्चुअली दैट मे नॉट बी अ स्टैटिस्टिकली रेलेवेंट ड्रॉडाउन बिकॉज शायद वो कर्व फिटेड है, ठीक है, या फिर शायद लक है. तो वो कैसे जाने कि भाई ये ड्रॉडाउन जो है ये स्टैटिस्टिकली वैलिड है या नहीं. तो उसके लिए मोस्ट स्ट्रेटजिस्ट क्या करते हैं कि दे डू मॉन्टी कार्लो एनालिसिस वेयर यू डू 1000 सिमुलेशंस ऑफ द सेम PNL ऊपर नीचे करके. अगर पाथ जो है आपका प्रॉफिट लॉस का, अगर वो एक अलग पाथ फॉलो करता है तो आपका PNL कैसे दिखता, वो दिखाता है. सो आई विल अपलोड माई स्ट्रैटेजी रिजल्ट्स ऑन टू ChatGPT. आई विल टेल देम दैट यार ये ड्रॉडाउन आया है, बट यू फाइंड द मीडियन मैक्स ड्रॉडाउन ऑफ दिस, कि एक ऑन एंड एवरेज ऑन एंड मीडियन कितना हो सकता है. ऑल्सो टेल मी कि 90% टाइम्स ये कितना हो सकता है, ताकि मुझे पता है कि ये एक बड़ा रिस्क है जो मैं ले रहा हूँ, उतना बफर रखो मेरे कैपिटल में. So now doing a Monte Carlo may need some high-end software. I don't know what, but ChatGPT does it for me. So again, that's a blessing. And similarly, as I mentioned, look at standard deviation of your PNL. आप या तो खुद Excel में कर लो या फिर GPT को डाल दो, वो करके बता देगा आपको कि देखो टिपिकली 70% ऑफ योर टाइम्स आपका PNL इससे इसके बीच में होना चाहिए, तो ये नॉर्मल है, ये घबराइए नहीं. So what AI helps me is it helps me respect risk before the market teaches me it the hard way. So I think these are 3 applications that I really look forward to from an AI point of view. Very good. मज़ा आया. Yeah. मैं सीखा हूँ आज. मुझे तब मज़ा आता है जब मैं कुछ सीखता हूँ आज, है ना? Thank you so much. It is so much fun and using AI, I do a lot of things which you just mentioned, but there are a lot of things which can be still done. Because we are still at a nascent stage of AI and Absolutely. world is going to be so different. Absolutely. I like the fact that you're using it as your coach. Yeah. And using the world-class traders as your coach. Yeah. It can happen now if people want to. So जो पढ़ा रहे हैं ना, उनकी दुकान बंद होने वाली है because
AI सब कुछ कर देगा जो एक आम आदमी नहीं कर, एक्सेप्ट कि कंधा जो है वो अभी भी मेंटर ही दे सकता है, वो AI उस पर थोड़ा अभी भी दूर है. टिल मिस्टर Elon Musk is trying his best. He wants to give 2 billion human tabloid Yeah. to everyone so that कंधा भी हम उनसे ले सकें. Good, मजा आया वैभव. It was fun Thank you talking so to much. Thank you so much. You have a very good clarity. You are a good human and आप सही में एक अच्छे फैमिली मैन हैं. बस आप ऐसे काम करते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए. आपका हैंडल ट्विटर या wherever you are will share below the video so that people who want to connect with you want to connect. Just again a last disclaimer before we leave. As on date, what we know about him, he's doing his own trading, he's happy doing whatever he's doing. But obviously future में ये क्या करेंगे, कोर्स करेंगे नहीं करेंगे, एडवाइजरी करेंगे नहीं करेंगे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है. I really liked what he's doing, my team liked what he's doing and that's why we are sharing the knowledge. आपको जो भी करना है इनके साथ में आप जाने और ये जाने. Thank you so देना much, पड़ता है Vivek ji. disclaimer. Everyone now wants to save their ass these Absolutely, days. absolutely, yeah. Disclaimer Thank is you. important. And Thank you so fun. much. It was fun learning from you. See you soon. Thank you so much, Vivek ji. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.